गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आरबीआई रेट कट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने रेपो रेट को जो है 25 बेसिस पॉइंट से कट कर दिया है और कहा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ चल रही हैं ऑनगोइंग ट्रेड वॉर्स की वजह से, इसलिए हमें जो है मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो एमपीसी ने जो ये 25 बेसिस पॉइंट कट किए हैं, ये सेकंड कंसेक्यूटिव रेट कट है आपका पिछले, अगर हम देखें क्वार्टर के हिसाब से। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है क्योंकि ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स चल रही हैं और अनसर्टेनिटीज़ हैं जो टैरिफ्स अनाउंस किए जा रहे हैं कंट्रीज़ द्वारा। तो एमपीसी ने कहा है कि अब उनका फोकस जो है वो न्यूट्रल से अकोमोडेटिव की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब कि वो दोबारा भी रेट कट करने की तरफ आगे जो है वो फैसला ले सकते हैं। तो आरबीआई ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है उसको भी रिवाइज करके 6.7% की बजाय अब 6.5% कर दिया है। कहा है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ट्रेड वॉर्स का और पॉलिसी अनसर्टेनिटीज़ का, वो जो है हमारी ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करेगा। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ जो है उससे इन्फ्लेशन भी ऑफ कोर्स जो है वो बढ़ेगी, लेकिन आरबीआई का ये कहना है कि ग्रोथ कंसर्न्स इस टाइम पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन वरीज उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन वैसे भी मैनेज कैटेगरी में ही आती है। तो ट्रेड फ्रिक्शंस की वजह से जो है इन्वेस्टमेंट हर्ट हो रही है, कंजम्पशन हर्ट हो रही है, नेट एक्सपोर्ट्स हर्ट हो रहे हैं, तो उससे इकोनॉमिक मोमेंटम जो है वो डोमेस्टिक जो है वो इम्पीड हो रहा होगा। ओके, तो यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन जो है 26% रेसिप्रोकल टैरिफ जो है इंडियन गुड्स पर लगाया है। ऑफ कोर्स 90 डेज़ का पॉज दे दिया गया है, बट अगर वो पॉज ना हटा तो एक उसके लिए जो है हमें एक मॉनेटरी रिस्पॉन्स तैयार रखना होगा कि आरबीआई कैसे उसे हैंडल करेगा। तो एमपीसी ने एम्फेसाइज़ किया है कि ग्रोथ जो है वो फ्रेजाइल है, खासकर वीक फर्स्ट हाफ में ग्रोथ हुई है। तो फ्रेश रिस्क जो हैं वो आ रहे हैं ग्लोबल स्लो डाउन के, तो ऑफ कोर्स उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। चाहे फूड इन्फ्लेशन जो है या फिर इन्फ्लेशन जो अदरवाइज़ भी जो है वो सही से मैनेज की गई है, लेकिन अभी भी नॉन इन्फ्लेशनरी सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रायोरिटाइज़ करना एमपीसी के थ्रू आरबीआई के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बेयर मार्केट। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। S&P 500 जो कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स है 500 लार्जेस्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज ऑफ द यूएस का, वो ब्रीफली बेयर मार्केट टेरिटरी में एंटर कर गया था साल 2022 के बाद पहली बार। बेयर मार्केट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट एक्सपीरियंस जिसमें प्रोलॉन्ग प्राइस डिक्लाइन होता है, जनरली 20% या उससे ज़्यादा का, और ये इससे जो है वाइड स्प्रेड इन्वेस्टर पेसिमिज्म होता है, लार्ज स्केल लिक्विडेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ होने लगती है, लोग ज़्यादा बेचना शुरू कर देते हैं और इकोनॉमी भी एक वीक होने लगती है। तो बेयर क्या होता है? एक ऐसा इन्वेस्टर जो ये देखता है कि प्राइस डिक्लाइन हो रहे हैं, तो मैं अभी अपनी जो स्टॉक है या सिक्योरिटी उसे बेच देता हूँ और बाद में जब और प्राइस कम होगा तो उसे ख़रीद लूँगा। तो बेयर मार्केट जो है जनरल इकोनॉमिक डाउन टर्न भी दिखाती है, जैसे कि रिसेशन, और ये बुल मार्केट्स का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिकल सेल डिसीज़। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट जो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के, उन्होंने एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रोफ्लूइडिक डिवाइस बनाया है जो कि एड करेगा हमारे को प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ सिकल सेल डिसीज़ में। तो सिकल सेल डिसीज़ क्या है? मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो आपके रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है। और ये होता कैसे है? फ्लॉड हीमोग्लोबिन की वजह से। सिकल सेल डिसीज़ में क्या होता है कि जो आपके डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन है टिश्यूज़ में, वो इंटरफेयर हो जाती है। आरबीसीज अदरवाइज डिस्क शेप्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन जिनको एससीडी होता है उनका एटिपिकल हार्मोन हेमोग्लोबिन होता है, जिसको हम हेमोग्लोबिन एस कहते हैं। मतलब ये आपके आरबीसीज को सिकल या फिर क्रिसेंट शेप में कर देता है और वो बेंड या मूव नहीं हो पाते हैं जब आरबीसीज ठीक से, तो वो ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं रेस्ट ऑफ द बॉडी में फ्लो होने से। तो सिकल्स जो शेप्ड सेल्स हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम भी नहीं चलते एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल शेप्ड आरबीसीज, और उसकी वजह से कांस्टेंट शॉर्टेज रहती है आरबीसीज की बॉडी में और उसकी वजह से अनीमिया हो जाता है पर्सन को। तो एससीडी जो है वो एक वेरिएंट ऑफ जीन की वजह से होता है जो आपकी बॉडी में इंस्ट्रक्शन देता है कि उसी तरह का ही हेमोग्लोबिन बनाओ, हेमोग्लोबिन एस। और जिनको एससीडी होता है उनके 2 सिकल सेल जीन्स होते हैं, हर जीन एक पेरेंट से मिला होता है। तो इसमें होता क्या, सिम्टम्स क्या होते हैं? एक्सट्रीम टायर्डनेस रहेगी, अनीमिया रहेगा, सिवियर पेन, अनीमिया, ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है, इन्फेक्शंस भी होती है। तो इसका ट्रीटमेंट के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट लगता है, लेकिन अब जीन थेरेपी को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है एज अ पोटेंशियल क्योर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हांता वायरस। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रीसेंट स्टडी की गई है हांता वायरस ट्रांसमिशन पे मादागास्कर में, और ये देखा गया है कि एक इन्वेजिव स्पीशीज़ जो हैं और उनका क्या रोल है, लैंड यूज़ पैटर्न का क्या रोल है,
हंता वायरस की ट्रांसमिशन में। तो ये इन्वेजिव स्पीशीज़ कौन सी है? ब्लैक रैट्स, ये आइडेंटिफाई किए गए हैं, ये एक्सक्लूसिव कैरियर्स हैं हंता वायरस के रूरल मादागास्कर में, और ये ओरिजिनली एशिया से आए हैं। तो हांता वायरस एक रेयर बट डेडली वायरस है जो स्प्रेड होता है यूरिन, फीसिस या फिर सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड रॉडेंट से। तो जो होता है कि आपके जो रॉडेंट का वेस्ट होता है उसकी जब एरोसोलाइजेशन होती है और डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, कई बार बाइट भी हो जाती है, तो उससे ट्रांसमिशन हो जाता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत ही कम है। और अब इसमें अलग अलग फेज़ होते हैं। प्रोड्रोमल फेज़ मतलब पहले 1 से 8 हफ्ते, जिसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। फिर सिवियर फेज़ जिसमें HPS हो जाता है, हांता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, फ्लूइड एक्युमुलेशन होने लग जाएगी लंग्स में, और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने रिसेंटली इंडिजिनस आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम UAE को ऑफर किया है। तो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो वल्नरेबल एरियाज़ को और पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है एयर अटैक से। ये इंडिजिनसली डिज़ाइन और डेवलप किया गया है DRDO द्वारा, लेकिन इसे प्रोड्यूस कौन कर रहा है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड। आर्मीनिया जो है वो फर्स्ट फॉरेन कंट्री बना जिसने ये मिसाइल सिस्टम इंडिया से परचेज़ किया 2022 में। इसका रेंज ऑफ ऑपरेशन 4.5 से लेकर 25 किलोमीटर्स तक रहता है। ऑल्टीट्यूड ऑफ ऑपरेशन इसका 100 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर्स तक रहता है। और ये टारगेट कौन से होते हैं इसके? जो होते जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, UAVs हैं, और ये साइमल्टेनियसली मल्टीपल टारगेट्स को ये एंगेज कर सकता है। ये पूरा वेपन सिस्टम जो है मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर कन्फिगर होता है, और ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर इंश्योर करता है कि अडेप्टेबिलिटी रहे फ्यूचरिस्टिक एयर डिफेंस एनवायरनमेंट्स में भी इसकी। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रफाल M जेट्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया 63,000 करोड़ की डील 26 रफाल M फाइटर जेट्स फ्रांस से प्रोक्योर करने के लिए इंडियन नेवी के लिए। तो इनिशियली ये MMRCA टेंडर 2007 का है, जब प्लान किया गया था इंडिया द्वारा 2007 में कि हम 126 जेट्स लेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ, लेकिन उसे 2015 में शेल्व ऑफ कर दिया गया था। डायरेक्ट डील की गई फ्रांस के साथ 2016 में, 36 रफाल जेट्स खरीदे गए इंडियन एयरफोर्स के लिए 2019 से 22 के बीच में, वो डिलीवर भी हो गए। और अब जो ये डील है इसमें 22 सिंगल सीटर रफाल M जेट्स जो हैं वो कैरियर ऑपरेशंस के लिए परचेज़ किए जाएंगे, और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट्स होंगे। और ये जो है INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के ऊपर जो है ऑपरेट किए जाएंगे। तो डसॉल्ट रफाल जो है 5 जनरेशन ट्विन इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो डसॉल्ट एविएशन फ्रांस ने बनाया है, और मैक 1.8 तक की स्पीड ले जाता है। कॉम्बैट रेडियस इसका लगभग 1000 किलोमीटर है, और इसमें कई तरह के रडार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट हैं जो कि सुपर क्रूज कैपेबिलिटी भी देते हैं इसे, ऑफ कोर्स टर्बोफैन इंजन जो है इसके। और ये एक्सटर्नल पेलोड्स लगभग 9500 kgs का कैरी कर सकता है। तो इसके कई वेरिएंट्स हैं जो यहाँ पर मेंशन किए गए। रफाल CBM, जो M वेरिएंट है वो नेवल वेरिएंट है जिसे इंडिया प्रोक्योर कर रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025 में लॉन्च किया था ताकि सेल्फ रिलायंस आ सके क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में, और इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल्स को अचीव किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? वो मिनरल्स जो एसेंशियल है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, लेकिन इनके सप्लाई चेन रिस्क हैं क्योंकि ये अवेलेबिलिटी इनकी बहुत कम है और जोग्राफिकली कंसनट्रेटेड है। तो इंडिया ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 30 मिनरल्स को, क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया था 2022 में, और इसमें 24 मिनरल्स और बाद में ऐड भी किए गए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है फॉर क्रिटिकल मिनरल्स वो रेगुलरली रिव्यू करता रहता है इन मिनरल लिस्ट को और इसमें इसी के हिसाब से एडवाइस करता है पॉलिसी को। तो की इंस्टीट्यूशंस अगर हम देखें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि UNFC क्लासिफिकेशन के अंडर एक्सप्लोरेशन करता है, MEMC रूल्स के हिसाब से एक्सप्लोरेशन करता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जिसको भी RE ऑक्साइड्स मिले हैं बालोतरा में राजस्थान में। IREL लिमिटेड जो कि प्रोसेसिंग करता है बीच सैंड मिनरल्स की और ऑपरेट करता है रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग यूनिट्स को। ऐसे ही खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड भी है जो ऑफ कोर्स फॉरेन में जो है ये जो है इसकी बिडिंग करता है क्रिटिकल मिनरल्स की। तो टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर्स कौन से हैं क्रिटिकल मिनरल्स के? चिले, इंडोनेशिया, कॉन्गो, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। अब नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है क्या? ये एक स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का जो इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी और प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, और ये अलाइन करता है इंडिया के कमिटमेंट्स के साथ कि इंडिया नेट ज़ीरो एमिशंस चाहता है 2070 तक। ओके,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं थार डेजर्ट। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थार डेजर्ट जो है इंडिया में, हमें देखने को मिला कि उसमें स्ट्राइकिंग 38% राइज हुआ है ग्रीनिंग का पिछले 2 डेकेड्स में। और ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज इसलिए देखने को मिला है, उसकी वजह से जो है मानसून जो है रेनफॉल भी बढ़ी है और एग्रीकल्चर का भी एक्सपेंशन हो रहा है। तो थार डेजर्ट क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है ये वर्ल्ड का। ऑफकोर्स मोस्टली ज़्यादातर ये राजस्थान में ही है, लेकिन सदर्न पोर्शन इसका हरियाणा और पंजाब में भी आता है, नदर्न पार्ट इसका गुजरात में भी आता है। और एक कुछ परसेंट 15% जो है ये पंजाब और सिंध रीजन्स ऑफ पाकिस्तान में भी पड़ता है। तो ये इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में ये साउथ सतलुज रिवर से बाउंडेड है और ईस्ट में अरावली माउंटेन रेंजेस से बाउंडेड है। तो लगभग 1/10 ऑफ इको रीजन जो है वो सैंड ड्यून्स हैं, रेस्ट जो है वो क्रैगी रॉक फॉर्मेशंस हैं और सॉल्ट लेक बॉटम्स हैं। या हैरानी की ये बात है कि इस पर कोई भी ओएसिस नहीं है, जो कि बहुत अनयूजुअल है। तो थार डेजर्ट एक एक्सट्रीम क्लाइमेट फेस करता है। समर्स बहुत ही ठंडी, समर्स बहुत ही गर्म और विंटर्स बहुत ही कोल्ड। रेनफॉल बहुत कम होती है। स्ट्रॉन्ग डस्ट स्टॉर्म्स यहाँ पर लेकिन समर्स में बहुत आती हैं। एक सिंगल रिवर जो ये फ्लो होती है यहाँ पर वो है लूनी रिवर। और ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड है, याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 83 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर रहते हैं और कई तरह के मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स भी इंडिया के यहीं पर हैं और ये मेजर सोर्स ऑफ जिप्सम, लाइमस्टोन, सॉल्ट, बॉक्साइट, सिलिका है हमारे लिए। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is RBI rate cut. This topic is important for our economy section. So Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee has recently cut the repo rate by 25 basis point, citing global uncertainties from ongoing trade wars. And even RBI governor has warned that new tariffs could hamper domestic growth and exports. Of course, though inflation risk remains limited, but we are facing the growth challenges now. So MPC has reduced this repo rate by 25 basis points, and this is the second consecutive rate cut by RBI or MPC. So the move is aimed to support economic growth amid the increasing global tensions and uncertainties arising from the tariffs which were announced by the US president. MPC has also shifted its stance from neutral to accommodative, which means that they can also announce further rate cuts in the future. RBI revised India's GDP growth forecast also, and it has been, of course, revised down now, citing the negative impact of trade wars and policy uncertainties on global and domestic economic activity. While global uncertainties pose risks to inflation, but it is not the immediate concern of MPC as of now, because inflation remains within the manageable category. But growth concerns have far outweighed the inflation worries at present. Trade frictions are going to hurt investment, consumption, and net exports. Therefore, domestic economic momentum can be impeded. US administration's tariff on Indian goods may have been paused, but if they come into picture, then of course a cautious and proactive monetary response from the RBI would be required to manage growth. MPC has emphasized that growth remains fragile, especially after a weak first half in this financial year, and there are also risks due of global slowdown. We are having falling food inflation and a decisive improvement in the inflation outlook, but still we have a significant room to prioritize non-inflationary sustainable growth. The next topic is bear market. This topic is important for your economy section. So S&P 500, which is a stock market index that tracks the performance of 500 of the largest publicly traded companies in the US, has briefly entered into the bear market territory for the first time since 2022. A bear market is a financial market experiencing prolonged price declines, generally of 20% or more. And a bear market usually occurs along with widespread investor pessimism, large-scale liquidation of securities and other assets, and a weakening economy. Okay, so a bear is an investor who expects prices to decline, and on this assumption that this prices will further decline, he sells his borrowed security or commodity, and then he hopes to buy it back after later at a lower price. And this speculative transaction is also called short selling. So bear markets may also accompany general economic downturns like recession, and they are seen as the bear markets are seen as the opposite of upward trend, that is called the bull markets.
The next topic is sickle cell disease. This topic is important for your social issues. So scientists at the Raman Research Institute have developed an affordable electrofluidic device which aids in the preliminary screening of sickle cell disease. Sickle cell disease is the most common inherited blood disorder which affects your red blood cells or RBCs. It is marked by flawed hemoglobin. So sickle cell disease interferes with the delivery of oxygen to the tissues. Normally what happens is that RBCs are disc shaped and flexible. They therefore move easily through the blood vessels. But people with this disease have atypical hemoglobin molecules called the hemoglobin S, which can distort RBCs into a sickle or crescent shape. These sickle RBCs do not bend or move easily, and they can block blood flow to the rest of the body also. Additionally, sickle-shaped cells do not last as long as normal-shaped RBCs, and they cause a constant shortage of RBCs, and it leads to anemia. So SCD is caused by a variant in a gene that has instructions for your body to make one part of the hemoglobin. This changed gene is sometimes called a sickle cell gene, and people with sickle cell disease are born with two sickle cell genes, one from each parent. So what are the stages of it? In early stage, you feel extreme tiredness or fussiness from anemia. Then severe pain in the later stage can arise. Even organ damage can happen, and infections can also happen because, of course, you have compromised immunity. So what are the treatments here? A bone marrow transplant can cure sickle cell disease, and also gene therapy is also being explored as another potential cure. The next topic is hantavirus. This topic is important for your social issues. So a recent study on hantavirus transmission in Madagascar has highlighted a critical intersection between invasive species, land use patterns, and emerging zoonotic diseases. So black rats have been identified as that invasive species, which are the exclusive carriers of hantavirus in rural Madagascar. And these rats are originally from Asia, and but since 10th and 14th centuries, they have been spread widely across the island. Hantavirus is a rare but deadly virus that spreads through urine, feces, and saliva of infected rodents, and transmission primarily occurs through aerosolization of rodent waste, direct contact, or sometimes through bites also. Human-to-human transmission is extremely rare. So there are also phases of this virus progression. The first is the prodromal phase, in which flu-like symptoms emerge. Then the severe phase, hantavirus pulmonary syndrome occurs, and which involves respiratory distress, fluid accumulation in lungs, and of course potential heart failure. Okay. So the next topic is Akash Air Defense Missile System. This topic is important for your security section. So India has recently offered the indigenous Akash Air Defense Missile System to the UAE, which is a short-range surface-to-air missile system to protect vulnerable areas and points from air attacks. So it was indigenously designed and developed by DRDO, and it is produced by Hyderabad-based Bharat Dynamics Limited. And in 2022, Armenia has become the first foreign country to buy this missile system. Its range of operation is 4.5 to 25 kilometers. Its altitude of operation is 100 meters up to 20 kilometers. And the target types include helicopters, fighter aircrafts, UAVs, etc. And it can simultaneously engage multiple targets in group mode or autonomous mode. So it has high immunity against active or passive jamming also. The entire weapon system has been configured on mobile platforms, and it has been based upon open system architecture so as to make it adaptable to existing and futuristic air defense environments. The most important element of this missile system is that its battery is high power, multifunction, and its high power multifunction Rajendra phased array radar, which basically tracks the incoming threats, and it can electronically scan and guide the missile towards those targets. Okay, it also provides information on the range, azimuth, and the height of a flying target. So the next topic is Rafale M jets. This topic is important for your security section. Recently, Cabinet Committee on Security has approved a 63,000 crore deal for procuring 26 Rafale M fighter jets from France for the Indian Navy. Initially, the MMRCA tender was based on in the year 2007, when India was planning to acquire 126 jets with technology transfer, but it was shelved in 2015. A direct deal was made in 2016, which led to 36 Rafale jets for the Indian Air Force, and which were delivered between 2019 to 2022. So now this deal would include 22 single-seater Rafale M jets
for carrier operations, and 4 twin-seater trainer variants which are non-carrier compatible. But these jets are meant to operate from INS Vikramaditya and INS Vikrant. So this Rafale fighter jet is made by Dassault Rafale, and it's a Dassault company, or Dassault Aviation, and it's a 5th generation twin engine delta wing multi-role fighter aircraft, and it can achieve speeds of up to Mach 1.8. It has a combat radius of about which exceeds 1,000 kilometers. It is equipped with advanced radars or electronic warfare suit. It is powered by turbofan engines, which provides this aircraft with super cruise capability also, and it can carry external payloads of up to 9,500 kgs. So there are several variants of Rafale C, B, or M. M is the naval variant which India is going to procure from France. So the next topic is critical minerals. This topic is important for environment section. Government of India has launched this National Critical Mineral Mission in 2025 to boost self-reliance in the critical minerals sector and support India's clean energy goals. So critical minerals are those which are essential for modern technologies and national security, but they have supply chain risks due to their limited availability or geographical concentration. So their criticality changes over time depending on technological demand and supply dynamics. 30 critical minerals have been identified by Ministry of Mines Committee in 2022, and a Center of Excellence for Critical Minerals regularly review the mineral list and advise policy. So which are the key institutions involved in this? Geological Survey of India, which leads exploration under UNFC classification and MEMC rules 2015. Then we have Department of Atomic Energy, which has identified over 111,000 plus tons of rare earth elements oxide in Malhotra, Rajasthan. We have IREL Limited also, which leads processing of beach sand minerals and operate rare earth extraction and refining units. Then we have Khanij Videsh India Limited, which has signed agreements with Argentina and Australia for these critical minerals. So top global producers of critical minerals include Chile, Indonesia, Congo, China, Australia, and South Africa. And what is the National Critical Mineral Mission? So it is the strategic initiative by Ministry of Mines, which is aimed to ensure long-term availability, security, and processing of critical minerals, which are vital for our clean energy technologies, because we have a commitment to net zero emissions by the year 2070. So the next topic is Thar Desert. This topic is important for your environment section. So Thar Desert in India has seen a striking 38% rise in greening annually over the last 2 decades, driven by a significant increase in monsoon rainfall and agricultural expansion. So Thar Desert is also called the Great Indian Desert. It is the 9th largest subtropical desert in the world. It lies mostly in Rajasthan, but this desert also extends into the southern the desert also extends into the southern portion of Haryana and Punjab and the northern part of Gujarat. The portion of the desert that lies in Punjab and Sindh region of Pakistan is about 15%. It is bounded on the northwest by Satluj River and on the east by Aravalli mountain ranges, and it is also bounded on the south by salt marsh known as the Run of Kutch. So about 1/10 of the ecoregion is sand dunes, while the rest is craggy rock formations and salt lake bottoms. It is an unusual phenomena that it does not have any oasis. Thar Desert has an extreme climate. Summers are very hot here, winters are very cold. There is only a single river that flows through this desert called the Luni River. And the important fact is that Thar Desert is the most densely populated desert in the world, with about 83 people per square kilometer living here. So it is also rich in variety of minerals, especially it is one of the largest coal reserves in India, and it is also a major source of gypsum, limestone, salt, bauxite, silica, etc. for us. Okay. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.